तो आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग अ पेज फॉल्ट और उसके लिए जो टिप्स है वो हम देखेंगे। अगर आप तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि अब मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पेज फॉल्ट क्या होता है और ये कब अकर होता है? ओके, इट अकर्स व्हेन अ program tries to access a page that is not currently present in a main memory. Okay, and then पेज फॉल्ट occurs और इसके लिए 6 स्टेप्स है। ये 6 स्टेप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज रेफरेंस। ओके, रेफरेंस में क्या होता है? सीपीयू ट्राइज टू एक्सेस अ पेज यूजिंग इट्स लॉजिकल एड्रेस एंड एमएमयू memory management unit checks the page table and finds that the page is not in main memory. Okay, second is trap the OS. Okay, hardware generates a trap to inform the OS that page fault has occurred. Now it's check the validity, whether the requested page is valid or not. If it is invalid, then process terminated. If it is valid, OS proceed to fetch a page. Now bring the page into a memory. मतलब पेज को मेमोरी में लाना है। सो उसके लिए OS locate a free frame in a physical memory and loads the requested page from packing store into this frame. Now update the page table to show that the page is now available in the memory and it is a valid bit is set to 1. So and again restart the instruction. Okay, CPU restart the instruction that caused to page fault. Now page is available in the memory and instructions are executed successfully. Okay, so this is the diagram and you have to draw this on your exam. Okay, so let's see. Okay, there are 6 steps in find reference. Second one is trap. Third one is page is on a backing. Okay, this is the fourth one and this is the fifth and this is the sixth. So the load memory reference goes to page table, then trap out to the OS backing store, bring page in a free frame. Okay, reset the instructions. Are you clear? Now नेक्स्ट के टॉपिक में हम पढ़ेंगे